Have you ever thought to be an astrologer, the master of the future events? No, I'm just kidding. But Mendeleev actually did it. Dmitry Mendeleev, the Russian chemist, introduced the concept of periodic table. Not only this, but he predicted many undiscovered elements. तो क्या जरूरत थी periodic table की? It's not just a chart that you put on your walls or on your study table. It's like going to shopping to D-Mart. Weekend पे जाते हो मम्मी पापा के साथ. Now when you talk about D-Mart, there are different sections, right? Grocery लेना है तो right में, garments लेने हैं तो left में, electronic gadgets बीच में मिलेंगे, and so on. Why did actually D-Mart did this? It actually did it to make the shopping experience all the more easier and smoother. गर्दी ना हो जाए इसलिए उन्होंने क्लासीफाई कर दिए हैं अलग अलग सेक्शंस. इसी तरह से जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, इनिशियली दे वर जस्ट 10, 20, 30 एलिमेंट्स. बट अगर मैं मेंडलीव की बात करूं तो उनके समय में देयर वर 63 एलिमेंट्स व्हिच वर डिस्कवर्ड, एंड टू क्लासिफाई देम इनटू सेपरेट पीरियड्स एंड ग्रुप्स बिकम एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट ही डिड. उनका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी व्हिच वाज एटॉमिक मास. He arranged all the available elements in the increasing order of their atomic masses. और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रिडिक्शन किए ऐसे एलिमेंट्स के जो तब डिस्कवर भी नहीं हुए थे. Like you talk about gallium, germanium or scandium. These were the elements which were already predicted by Mendeleev. And then came Henry Moseley. Henry Moseley actually introduced the concept that it is not the atomic mass but the atomic number which is the fundamental property of any element. And the modern periodic table जो हम आज use करते हैं, that is actually based on atomic number and not on the atomic mass. This concept actually forms the foundation for JEE and NEET chemistry syllabus. Name your favorite group in the periodic table down in the comments.